Hi everyone, it's day 2 for cleaning the creative mess. So आज भी मैं बीट्स ही क्लीन कर रही हूँ. So आप देख सकते हैं ये ट्रे है और इसमें बहुत सारे बीट्स हैं and these beads are collected over period of time. I will be using a Ferrero Rocher packaging box. अब chocolates किसको पसंद नहीं है, but you know after eating chocolates we generally throw the boxes. But you know what? Such packaging is really useful to store small items like जैसे buttons हो गए या miniatures हो गए या फिर small sequences हो गए. For nowadays हम shaker slices use करते हैं तो आप वो भी स्टोर कर सकते हो. इसमें बहुत छोटे छोटे सेक्शन है और हम उनको उसी तरह यूज़ कर सकते हैं. वी कैन सेग्रीगेट आइटम्स अकॉर्डिंग टू द कलर और अकॉर्डिंग टू द साइज़, विच एवर वे you want. So now I'm almost done with cleaning this and you can notice that I have segregated the beads according to their look or it will definitely save my time when I'm doing my work and it is much neater to look at. Plus हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमें कोई beads restock करने हैं कि नहीं. So I guess this is the best and the cheapest way to store your beads. So if you like this video, please subscribe to my channel because there are more videos coming in your way.